You want to study for 4 hours straight, but you can't. You want to complete one single task in one sitting, but you can't. Your book is in front of you, your teacher is explaining you something, your friend is trying to teach you something, but you are not present over there. Your body is there, but your mind is in Kenya. You feel sleepy after reading one single page or even after 20 minutes. If any of these are relatable to you, then boss, this video is for you. So by the end of this video, I assure you that you will be more motivated, more confident enough, and you will know when and how to distract your distractions properly. So let's dive into the video. Hello everyone, if you are new to the channel, hi, I am Vibha Raibakar and I am a final year physiotherapy student. So in this video, I am going to tell you 3 simple steps to distract your distractions. So after preparing years and years for multiple exams, performing great in some but messing up in few, I totally understand that how any problem can totally destroy a student's mental health and his exam preparation. Depression, anxiety, stress, lack of motivation, lack of discipline, there are several factors which will prevent you from staying focused on your goals or staying focused on your studies. But the most crucial problem which many of us and which majority of students are facing is distraction. On an average, a single person gets distracted 11 times per hour while studying. So imagine how much time you have wasted and how much time could be more productive if you were not distracted. You will have more than 2 hours a day to study or to do something productive than your batchmates or than your colleagues. It's crazy, right? More than 2 hours every single day. So let us start with our first point, that is measure your time. That means आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितना टाइम इंस्टा पे स्क्रॉल करते हो, कितना टाइम नीचे घूमने चले जाते हो, कितना टाइम पढ़ते हो. Make a note of every single activity you do throughout your day. ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस डे यू नो कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ ये सारी चीज़ों में. इसके बदले अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा आज इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाता. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से ट्रैक योर टाइम. सी कि आपका ज़्यादा टाइम कौन सी एक्टिविटी में गया है. ज़्यादा टाइम सोने में गया है, ज़्यादा टाइम खाने में गया है, ज़्यादा टाइम इंस्टा स्क्रॉल करने में गया है. बिकॉज ऑन एन एवरेज वी स्पेंड मोर देन 2 to 3 hours ऑन सोशल मीडिया एवरी सिंगल डे. Now that you know how much time you have wasted and how much time you have been productive the previous day, you can now make a proper timetable. This is what brings me to our second point, to plan your schedule. Plan your timetable. यहाँ पर आपके पास एक बेसिक आइडिया है कि मैंने पिछले दिन में कितना टाइम वेस्ट किया था. सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम स्लॉट यू कुड एडजस्ट दैट टाइम पास वाला टाइम इनटू योर स्टडी का टाइम. फॉर स्टडिंग यू कुड यूज पोमोडोरो टेक्निक, which means studying continuously for 25 minutes and a break of 5 minutes. Do this for 4 to 5 rounds continuously and take a long break. What happens in these techniques is it prevents our brain from getting fatigued easily. Spacing out between intervals of studying is very much important to prevent your brain from getting fatigued and to remember the things which you have studied in long run. Now before moving towards our second point, I want you all, those who are watching this video, to take a paper and a pencil or a pen in your hand and make your timetable now. Set your goals on sheet of paper right now. Go and take the paper now. हो गया, लिख लिया. Now that you have written all the goals for your study routine the next day, now you have got the basic idea कि मुझे कल के दिन करना क्या है. Now distribute that goals by giving them particular time slot. Now while you are studying, make sure that your environment is of distraction free. Eliminate all the distractions. If you have a cell phone, keep it in separate room. Not disturb mode on कीजिए और उसको रख दीजिए बाजू में. Airplane mode पे डाल दीजिए phone. You have many solutions. All the excuses you give. एक घड़ी रख दीजिए अपने सामने और एक टाइमर लगा दीजिए जिससे you will track your own time कि मैंने इतना टाइम पढ़ लिया है, सिर्फ इतना ही टाइम बाकी है. And once you complete your target, make sure to reward yourself with whatever you love. That can be having an ice cream, watching a favorite series, or going out on a walk or talking with your loved ones. ठीक है. रिवॉर्ड सिस्टम क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट विल गिव अ मोटिवेशन टू योर ब्रेन कि मेरे को इतना पढ़ाई करने पे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है. So it helps in long run. Next thing which I would like to mention is to declutter the dopamine releasing things. That can be your Instagram, that can be YouTube, Twitter, Facebook, etc. etc. इससे क्या होता है, आप शॉर्ट टाइम के लिए मोटिवेटेड हो जाते हो कि मैंने आज ये रील देख लिया तो बस मैं आज पढ़ के ही रहूँगी. बट दैट वोंट लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम. 25 to 30 मिनट्स के बाद यू विल बी अगेन लाइक बस हो गया आज के लिए, फिर से इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, अगेन डोपामिन रिलीज होगा, अगेन आप कुछ और काम करने जाओगे. ओके, सो इट्स बेटर
to do a dopamine detox. You can do it for 1 day, 1 week, 1 month. And remember not to compare yourself with anyone out there. You have your own capabilities. So work according to your own capability rather than comparing yourself with others. अगर आपको कंपेयर करना ही है तो अपने पहले वाले सेल्फ के साथ कंपेयर कीजिए और अभी वाले सेल्फ के साथ कंपेयर कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर सेल्फ बेटर होगा. अंडरस्टूड? कमिंग टुवर्ड्स अवर लास्ट पॉइंट, दैट इज स्लीप. बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि इतना क्या सोने पे एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट स्लीप ही डिटरमाइन करेगा आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको कितनी अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी एंड कितने टाइम तक याद रहेंगी. मेक श्योर टू टेक अ 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे एनी हाउ. एग्जाम का पीरियड है, आई कैन अंडरस्टैंड 5 to 6 hours हो जाता है, बट आफ्टर दैट आपका जो डेली का स्लीप रूटीन है दैट शुड बी ऑफ 7 to 8 hours एनी हाउ. स्लीप विल डिटरमाइन एंड मेंटेन योर सर्कैडियन रिदम, which will help in long run to maintain your mental health as well as physical health at a good level. Okay, so अब मैंने इतना सब तो कुछ बता दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना. तो क्वेश्चन कम्स कि हाउ डू आई डू इट एवरी सिंगल डे. रोज कैसे मैं मोटिवेटेड रहूँ? सिंपल. इट इज समथिंग कॉल्ड एज आइडेंटिटी स्विचिंग. व्हाट आई मीन इज थिंक एंड बिलीव दैट यू आर अ टॉपर. अगर आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो कंटिन्यू फॉर हाफ एन आवर, थिंक कि अगर मैं टॉपर होती तो मैं ये करती. सिंपल. Believe you are the topper of your class. A topper will always control his time. He will always know कि मुझे ये टाइम पे ये करना है and ना कि ये करना है. So who is the topper of your class? You. You are the topper. Believe it. Write it in the comments. This is so powerful for your subconscious mind that if you continuously keep on reminding yourself कि yes, I am the topper, I have to do this, this will happen in your real life as well. Follow this for a week, for a month, for a year and then see the results. You can thank me later. बस टॉपर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना. If you have reached here till the end of the video, make sure to subscribe to the channel because काफ़ी लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं and आपका एक सब्सक्राइब करना would mean a lot to me. Thank you for watching till the end. I will catch you in the next video. Till then, bye. Take care. Damn.